Okay, today's topic of presentation is patient and public involvement and engagement. Please raise your hands अगर आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई है अभी से. ओके तो मुझे सबसे पहले पता चला था कि कोई पब्लिक एंगेजमेंट टाइप की चीज़ होती है. व्हेन आई वाज गोइंग टू सबमिट माय वन ऑफ माय इंटरनेशनल आर्टिकल्स इन एन इंटरनेशनल जर्नल, दे आस्क्ड मी कि आपने डिड यू इन्वॉल्व पब्लिक इन योर स्टडी. तो मुझे लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं कि ये पब्लिक को क्यों मैं इन्वॉल्व करूँ, क्योंकि ये मेरा पेपर है, मेरी स्टडी है, तो मैं पब्लिक को क्यों इन्वॉल्व करूँ. तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी. और फिर मैंने कुछ सर्च किया इंटरनेट के ऊपर, इधर उधर चीज़ें देखी, फिर भी मुझे थोड़ी बहुत समझ आई. तो आज कौन कौन, मुझे प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, थोड़ा बहुत ही बेशक. एक. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू वॉच अ वीडियो जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम आमना बाजी. वालेकुम अस्सलाम साद. आप कहाँ जा रही हैं? मैं एक क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा हूँ, वहीं जा रही हूँ. क्लिनिकल ट्रायल, ये क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल तहकीक, रिसर्च या मुशाहिदात हैं जो ये मालूम करने के लिए किए जाते हैं कि आया कोई नई दवा, सर्जरी या थेरेपी मौसर और महफूज है या नहीं. क्लिनिकल ट्रायल करके ही हम नई साइंसी तहकीक और इलाज को मरीजों तक पहुंचा सकते हैं. क्लिनिकल ट्रायल्स तो बहुत अहम हुए इसका मतलब. दुरुस्त. दर हकीकत पिछली सदी में बहुत सारी नई दवाइयाँ, सर्जरी और इलाज के तरीके क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर शुरू हुए और आज हम सब इससे फायदा हासिल कर रहे हैं. मगर ये क्लिनिकल ट्रायल करता कौन है? क्लिनिकल ट्रायल्स फार्मास्यूटिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनियां, यूनिवर्सिटीज, तिब्बी रिसर्च इदारे और अस्पतालों के जरिए किए जाते हैं. पाकिस्तान में कई मखसूस अस्पतालों को क्लिनिकल ट्रायल्स करने की इजाज़त है. इन अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल्स यूनिट या CTUs हैं. मुझे बताओ कि क्लिनिकल ट्रायल होते कैसे हैं? क्लिनिकल ट्रायल का सफर एक नए तहकीकी सवाल से शुरू होता है. हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और माहिरीन इकट्ठे होकर एक तहकीकी ग्रुप यानी ट्रायल ग्रुप बनाते हैं. ये ट्रायल ग्रुप बहुत सारे माहिरीन से जायजा करवाता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ट्रायल काबिले असर और काबिले एतमाद नताइज हासिल करने में कामयाब होगी. जिस मर्ज पर तहकीक की जा रही है इससे मुतासिर मरीजों से मशवरा लिया जाता है और साथ ही कम्युनिटी को भी शामिल किया जाता है ताकि तस्दीक की जा सके कि ये तहकीकाती अमल अहम, फायदेमंद और महफूज है. ये अमल एक मुशावरती ग्रुप करता है जिसे पेशेंट एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ग्रुप या मरीजों और अवाम का शमूलियत और मुशावरती ग्रुप कहते हैं. एक बार जब ट्रायल डिजाइन हो जाता है तो इसे मंजूरी के लिए इंडिपेंडेंट एथिकल कमेटी यानी आज़ाद इखलाकियाती कमेटी को जमा कराया जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आला तरीन इखलाकी मयारात लागू किए गए हैं. ये इखलाकियाती कमेटी इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इसके फवाइद इसके खतरात से ज्यादा हों. इतने सारे अमल से गुजरकर क्लिनिकल ट्रायल मंजूर होते हैं? हाँ, एक बार ट्रायल मंजूर हो जाए तो ट्रायल ग्रुप के हर रुकन की बाकायदा ट्रेनिंग होती है. मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद मरीज पर ट्रायल का आगाज होता है. मरीज के डॉक्टर्स और रिसर्चर मिलकर इस बात का यकीन करते हैं कि मरीज का ट्रायल में हिस्सा लेना मुनासिब और महफूज है. अगर ऐसा है तो मरीज को बाकायदा कंसेंट फॉर्म या रजामंदी फॉर्म दिया जाता है और इसे तफसील से ट्रायल के खतरात, फवाइद और सवालात पूछने और मशवरा करने का मुनासिब वक्त दिया जाता है. अगर मरीज मुतमईन होकर ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रजामंदी देता है तो ट्रायल शुरू कर दिया जाता है. ट्रायल के दौरान मरीज की हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इदारे इस अमल की निगरानी करते हैं. बाज़ औक़ात ट्रायल के दरमियान ही ये वाज़ेह हो जाता है कि एक इलाज दूसरे इलाज से बेहतर है. इस मकाम पर ट्रायल रोक ली जाती है ताकि तमाम मरीजों को बेहतरीन मंजूर शुदा इलाज फराहम किया जा सके. और ट्रायल खत्म होने के बाद क्या होता है? ट्रायल मुकम्मल होने के बाद डेटा का तज्जिया किया जाता है और नताइज पेशेंट्स, साइंटिफिक कम्युनिटी
اور عوام کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ یہ تمام معلومات اور نتائج صحت کی دیکھ بھال کو بہتر کرنے میں مددگار ہوں اور مریضوں کو بہترین علاج مل سکے۔ واہ بالکل، ہم سب کا فائدہ ہے اس میں۔ تمہیں کلینکل ٹرائلز کے بارے میں اور جاننا ہو تو www.zedu.edu.pk/ppie پر دیکھ لینا۔ تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی، ایک اوور ویو ملا، تو ہاؤ مینی آف یو نو کہ کلینکل ٹرائل کیسے ایوالو ہوتا ہے، یا ہاؤ مینی آف یو ہیو ایور انوالوڈ پبلک ان اسٹڈی، یا کبھی سوچا ہو کہ آئی شوڈ انوالو پبلک ان مائی اسٹڈی، اس اسٹڈی میں مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے، اور وہ کیوں پوچھنا چاہیے؟ سپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری فیملی میں یا ایون ہم بھی whenever we fall sick, we fall ill، ہمارا کوئی بھی ریلیٹیو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، تو کیا ہمارے ایموشنز اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں؟ یس۔ تو کیا ہمارا پوری فیملی اس ایک پیشنٹ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہے، ہم اس جرنی میں ہوتے ہیں، اس بیماری کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اٹس آر رائٹ، یا اٹس اینی پیشنٹس فیملیز رائٹ کہ وہ انوالو ہوں اس کی ٹریٹمنٹ میں اور وہ سارے پروسیجر میں۔ whenever we start a clinical trial we enroll patients, not subjects, human beings, patients، اور ان کے ساتھ ان کی فیملی انوالو ہوتی ہے، پورا ایک جرنی ہوتا ہے۔ تو we should involve the patient sentiments، اس کی کانسنٹ لینا صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک پیپر کے اوپر کانسنٹ لی، سائن کرایا اور بس، اور پیشنٹ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز پہ سائن کر رہا ہے۔ ڈیزائن کرنے سے پہلے کہ کیا میں یہ ڈرگ لے کے آ رہا ہوں، میں نے اس پیشنٹ کو دینی ہے، میں نے یہ ٹرائل شروع کرنا ہے، میں یہ سرجیکل پروسیجر شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یا فار دیٹ میٹر آئی ہیو ٹو انٹروڈیوس اے نیو ٹیسٹ ان مائی پیتھولوجی لیب، ہیو آئی ایور آسکڈ اے پیشنٹ کہ کیا میں کر لوں یہ؟ نہیں، میں تو سوچتی ہوں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو میں نے کرنا ہے نا، بٹ کرنا کس پہ؟ اس پیشنٹ کے اوپر۔ تو اسی لیے پبلک انوالومنٹ از ویری ویری امپورٹینٹ ایتھیکلی، اور آگے جا کے بھی پیشنٹس کے لیے۔ آپ لوگ بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ whenever you start a project تو پیشنٹس ڈراپ آؤٹ، they tend to drop out، اور اگر you follow the patients تو وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں سوری۔ کیوں؟ کیونکہ you have never involved the patient from day one۔ تو آج کی جو پریزنٹیشن کا ایک مقصد ہے، یو ہیو ٹو انوالو پبلک، یو ہیو ٹو انوالو پیشنٹ اینڈ دیئر فیملیز اینڈ رینڈم پیپل فرام دا کمیونٹی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نہ کسی کی فیملی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار تو ہوا ہوتا ہے، وہ اس چیز سے گزرا ہوتا ہے۔ سپوز آپ تھیلیسیمیا کے اوپر ایک ٹرائل کر رہے ہیں اینڈ یو آر اسٹارٹنگ اینڈ یو آر میکنگ گروپ، تو یو ہیو ٹو انوالو دا فیملی جس کے گھر میں کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ ہوگا، کیونکہ وہ سارے اس پاتھوے سے گزرا ہوگا، اس کو پتا ہوگا میں نے اس وقت ٹریٹمنٹ لینا تھا، ایموشنلی میں اس چیز سے گزرا ہوں، فائنینشلی میں اس چیز سے گزرا ہوں۔ تو وہ آپ جب انوالو کرتے ہیں تو آپ کی ٹرائل پوری ہوتی ہے۔ اینڈ سوری، دس از مینڈیٹری، دس از ناٹ آپشنل کہ آپ اچھا کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، دس از مینڈیٹری۔ اس کے بغیر انٹرنیشنل ٹرائلز نہیں ہو سکتی۔ اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ آور پریزنٹیشن۔ What are clinical trials? Clinical trials are basically prospective research studies on human participants to evaluate medical, surgical interventions. جو بھی ہم interventions کرتے ہیں اس کو evaluate کرتے ہیں۔ Generate data on dosage, safety and efficacy. کس چیز کی efficacy؟ Drugs. Conducted only after they have received health authority or ethics committee approval. And besides being participants in a clinical trial, members of the public can actively collaborate with researchers in designing and conducting clinical research. And this is known as patient and public involvement. Not only involvement, but designing the study. Before starting the project, we have to involve public. Patient and public involvement and engagement means people as partners in research, not just as subjects. You don't have to call them as cases, subjects. They are your partners. آپ نے ان کے اوپر ریسرچ کرنی ہے۔ It focuses on doing research with people rather than on them. Inclusive engagement in research design, execution, and dissemination. Okay, so why public engagement matters? What do you think? کیوں کرنی چاہیے پبلک انگیجمنٹ؟ ابھی میں نے تھوڑا بتایا نا، ٹھیک ہے؟ Clinical trials are designed to benefit people. Yet historically, the voices of patients and the public have been missing from their design and execution. Whenever you read a clinical trial on the internet,
You always have an idea कि क्या जबरदस्त जी researcher ने क्या काम किया है, what an amazing work, what an amazing finding, but you never find a hint of public involvement in that study. So basically, the clinical trials have to benefit people. Public involvement brings relevance to the research, ensures accountability. You are accountable, clinicians are accountable, pathologists are accountable, enhances ethical integrity and transparency of your work. आपके काम की ट्रांसपेरेंसी सामने आती है. Builds community trust and trial credibility. Is the trial credible? Okay. And bridges the gap between science communication and active research involvement and encourages long-term community partnership. Once you design a group, तो they develop trust in you. उनको पता होगा कि इस ग्रुप ने, चुगताई ग्रुप ने एक रिसर्च की थी and it was a hit. तो in the next project, they will offer कि okay, I'm going to participate. It aligns the research with real world needs. सिर्फ कागज पे नहीं हो रही. Frequency and percentage of फलाना फलाना चीज in this ये हमारे टॉपिक्स होते हैं ना. तो एक्चुअल में क्या पेशेंट को फायदा हो रहा होता है, उसको तो पता भी नहीं है कि एक रिसर्च पब्लिश हो गई है. तो these kind of involvement they actually benefit people. Core principles क्या हैं? The foundation of PPI lies in respect of patient and the clinician. Transparency किस चीज की? Your work. Shared decision making between the clinician, pathologist, and the patient, inclusiveness of the patient, and valuing diverse perspectives. Different people have different perspectives. मैं एक चीज एक तरीके से देख रही हूँ, हो सकता है आप दूसरे तरीके से देखें, हो सकता नहीं, यकीनन आप दूसरे तरीके से देखेंगे. तो पेशेंट उस ड्रग को या इवन उस टेस्ट को या इवन उस ब्लड जो आपने लिया है, तो वो यही कहेगा कि मेरा तो डॉक्टर साहिबा बहुत ब्लड ले लिया आपने, उसके लिए ये बहुत ब्लड है, आपके लिए ये 3cc 5cc होगा. So it matters. What is the impact? High recruitment and retention in trials. Your patients tend to like fall out. वो आपके साथ नहीं देंगे if you don't involve the patients. Stronger participant understanding. The participants, they actually understand what you are going to do. What is the trial? What is the project? Better informed consent materials. Now, honestly, tell me how many of you have made the patient sign the consent form उसको बहुत properly explain करने के बाद? How many of you? बहुत कम. We just give the form to the patient. We tell them, okay, ये project है, sign कर दें. वो sign कर देता है. तो ये नहीं करना. Reduces community resistance. Some of the projects, they are actually they are resisted by some of the groups. Enhanced outcomes that matter to the patient, that actually matter to the patients. Improved trial credibility and promotes transparency. So, what is the benefit to the trial design actually? Public input can refine your research questions. वो actually बताते हैं कि आपकी research question क्या हवा में तो नहीं जा रही. They actually refine your research questions. Improve the study protocols. Enhance the feasibility and relevance of trials. क्या वो ट्रायल वाकई आपके लिए फायदेमंद है या नहीं? Enhancing informed consent, it improves consent documents, making them clearer, culturally appropriate, and easier to understand. So यहाँ पे we have a cultural barrier also, so we have to take care of that. Improving recruitment and retention. Engaged communities are more likely to participate in and stay committed to the clinical trials, improving trial completion rates. Public role helps tailor the communication strategies, ensuring message are culturally sensitive and effectively disseminated. इस बात का क्या मतलब हुआ? What does it mean? हो सकता है मैं एक पेशेंट से, जी प्लीज. People don't talk about it. It's a taboo. तो उसमें क्या होगा कि हमें किसी से, हो सकता है मेरे लिए तो वो मैं बहुत ही मेरे लिए कोई सेंसिटिव ही ना हो, लेकिन किसी एक कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो. अगर मैं उस कम्युनिटी का एक जो पार्टिसिपेंट है, इफ आई इन्वॉल्व इन माय ग्रुप, तो वो मुझे बताएगा कि नो, यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन जस्ट लाइक दैट. You have to tailor it. You have to communicate properly. You have to go in a certain way rather than going directly, asking directly. It can be rude. The patient can drop out.
Dissemination of findings. Public involvement ensures findings are shared in accessible formats through community channels, increasing research and impact. How many of you have ever called the patient after the project and told them कि आपके ये results आए हैं? Very few. तो ये पेशेंट का राइट है that you call them and tell them and explain कि आपकी ये finding है. Key forms of public involvement: designing trials collaboratively, reviewing informed consent documents, advising on communication strategies, and participating in the dissemination of findings. Okay, so the reviewing of consent documents is very, very important internationally. For us, it's just a paragraph, but if you are going to publish your research internationally, they are very, very particular about the consent forms. They ask you कि ये consent form आपने कैसे design किया था? Have you ever asked any public group? तो आपके पास क्या आंसर होता है? No. You have never asked any public group before designing a consent form. So it is mandatory nowadays. Methods of engagement. Engagement methods include advisory groups, group of people, focus groups, focus on a certain area, certain disease, certain subject. Interviews of people, co-design workshops and public consultations. Okay, interviews are important. हो सकता है आपके ग्रुप में कोई आना चाहे जो कि just for the sake of fun आना चाह रहा हो. तो you have to interview, you have to make sure कि ये participant मेरे ग्रुप के लिए ठीक है. Broad community involvement. Outreach strategies include social media. How can we outreach? Social media, town hall meetings, partnership with NGOs, and engaging local influencers. How many of you know a name of some of NGOs, some of the NGOs which are actually related to you? How many of you? I think hematology people, they do know. So find out the NGOs in your areas. They are very, very helpful. They have funds also. Challenges in PPI. Common challenges क्या हो सकते हैं? Lack of time. आपका भी time और patient का भी time. Funding, training, and risk of tokenism. कि आपने सिर्फ randomly, you just randomly selected the group. You just randomly selected the patients without actually asking them. So how to overcome challenges? Addressing barriers involves early planning, setting clearer goals, providing training, and fostering genuine partnerships. Who will tell me the meaning of third and fourth point? Providing training. To whom? Patient. And also getting trained. अपने आप को भी train करना है और patient and families को train करना है about the whole trial. Fostering genuine partnerships between किसकी बात हो रही है? Patient and clinician. Institutional support and policy. Policies from ethics boards and funders often mandate or encourage public involvement to enhance study quality. Okay. Do we have an institutional policy for this? We do. We provide you with a consent form, but uski details में जानना is your duty. There is a consent form. It's mandatory to take consent from the patients. Impact on research outcomes. Engagement से क्या होगा क्या? Trial relevance, data quality, acceptance of results, accept किसने करने हैं results? Who is going to accept the results of your trial, of your study? Patient, yourself, and the journal. तो वो better acceptance होगी. Leading to real world application, actually real world application, not just a random topic. Prevalence of flanny disease in this area. No, actual study. Training and capacity building. Both researchers and public contributors benefit from training programs that enhance understanding and effective participation. Technology. Digital tools enable inclusiveness and efficient engagement. This include online surveys. You can just disseminate Google Forms, video calls or Zoom calls. There are so many ways to involve public. Feedback. Evaluating engagement helps refine your methods, ensure accountability, and demonstrate value to the funders and stakeholders. Okay, so one very, very important point. Many of the studies are highly funded.
and you have to make sure कि आपका जो global partner है, it's actually the company is actually satisfied by your work, and you have to prove it. Otherwise वो आपको आपके इंस्टीट्यूट को ही दोबारा कभी ट्रायल नहीं देंगे. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? सस्टेन्ड एंगेजमेंट फॉस्टर्स कम्युनिटी ओनरशिप, इन्फ्लुएंसेस हेल्थ पॉलिसीज, builds lasting research partnerships between you and the research organizations and public. ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो अब जब मैं बात करूं कि आई हैव टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च ग्रुप, आई हैव टू फॉर्मुलेट अ पीपीआईई ग्रुप, a public and patient involvement and engagement group. So what is the first step? Participation. People recruited to a clinical trial or other research study. Okay, who is going to give me example कि किस किस को मैं लूंगी? For example, I am going to conduct a trial on diabetes. किस तरह के लोग होंगे? Diabetics, families, pre-diabetics, very good. Pre-diabetics. And clinicians, nurses, ward boys, staffs, हर बंदे को I have to include in my group. Then engagement, information and knowledge about research is provided and disseminated to all the group members, सब लोगों में. Active partnership between patients and members of the public with researchers that influences and shapes research involvement. Okay, तो इस ग्रुप में मैंने ग्रुप बनाया, उनको एक दिन बुलाया मैंने लैब, and they are going to give me ideas. Okay, you are going to conduct this research. I think you should include this point. I think you should do this. I think you should include this test. I think you should give this benefit to the patient. I think the family members need this help. ठीक है? They are going to give multiple ideas. उससे क्या होगा? You are the researcher. आप बैठे हुए हो टेबल के इस तरफ. You are going to listen all those things and then design a research question and your study accordingly. After discussion, you have to write your abstract, not before that. You are not going to tell them, okay, I'm going to do this. You're going to tell them, my idea is this. What is your thought on this? Okay? तो आपका ग्रुप आपकी बार बार वही मेंबर्स रहेंगे, वो आएंगे, आप उनको चाय पिलाओगे, आप उनको होस्ट करोगे, लेकिन आप उनसे हेल्प लोगे कि मैंने ये स्टडी करनी है. तो और इसका आप लोगों को क्या फायदा होगा? योर रिसर्च इज गोइंग टू लाइक जंप इंटरनेशनली. बहुत अमेजिंग इसका इम्पैक्ट होता है, बहुत अमेजिंग इम्पैक्ट फैक्टर्स में पब्लिश होता है. ओके, आइडेंटिफाई द साइट टीम. यहां पे साइट टीम कौन है? यू. ओके, एंड द क्लिनिकल साइट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू रिक्रूट द पेशेंट्स. कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग. Provide the engagement coordinator site with an introduction to the. This is an example of an infectious society group. ठीक है? तो ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है. Then you have to plan the project. Then you have to recruit and engage the members. Then there is an inaugural group meeting. There is first meeting and then there are multiple meetings. And जो first meeting is like उसको face to face होना चाहिए, and the subsequent meetings can be online. And then there is first task. You give the task to your group. You have to do this. Okay, you have to design this. You have to incorporate this. Anything you like. Okay, so here comes the take-home message. PPI is not just a formality. It's not a formality, but an ethical and practical necessity. अगर आप किसी रिसर्च का हिस्सा हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे वो बताए? आप तो उसका सर खा जाएंगे कि ओके, आई हैव टू नो दिस, आई हैव टू नो दिस, इसका क्या आंसर है, ये क्या है, मुझे क्या फायदा मिलेगा, मेरे पेशेंट को क्या होगा? यू विल आस्क ना. तो दिस इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी. यू हैव टू प्रोवाइड. With the right tools and commitment, public engagement can thrive despite limited research infrastructure. Okay, I admit we have limited research resources, but we can do wonders. Early and respectful involvement builds trust, sustainability, and better outcomes for everyone. So thank you very much. I hope कि ये क्लियर हो गया आज की थोड़ी बात प्रेजेंटेशन. ओके, और हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था in the first meeting, Pakistan's first PPIA group meetings. पूरे पाकिस्तान का एक ग्रुप है. वर्ल्ड में बहुत जगह ग्रुप्स बन रहे हैं, पाकिस्तान में पहली दफा बना है. तो फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट डॉक्टर अस्मा, मैं, डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर सिद्रा, डॉक्टर महानूर, और कोई रह तो नहीं गया जी, हमने पार्टिसिपेट किया था. एंड वी आर मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान फर्स्ट PPIA ग्रुप.
and they have offered us to make a similar group in our institute. اسی لیے میں نے گروپ میں میسج بھی کیا تھا کہ جو لوگ ہمارے گروپ میں آنا چاہیں وہ آ جائیں. 3 سے 4 لوگوں نے اور بھی کہا تھا کہ ہم آنا چاہتے ہیں. اب یہ بات سمجھنے کے بعد if you want to get involved تو please come forward. yes anyone. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایکسپوئر بہت ہی امیزنگ ہوگا. آپ کہیں بھی جا کے بتائیں پی پی آئی گروپ میں ہیں تو وہ آپ کو آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہوگا. تھینک یو.